મુંબઈના રસ્તા પર દોરેલી સફેદ પટ્ટીને કારણે વિવાદ છેડાઈ ગયો છે। વિદ્યાવિહારમાં આવેલી કૈલાસ એવન્યુ નામની સોસાયટીમાં દોરેલી સફેદ પટ્ટીનો વિરોધ થયો। મંજૂરી વગર જૈન મુનિઓ માટે સફેદ પટ્ટી બનાવી હોવાનો દાવો થયો। પ્રસાદ વેદ પાઠક નામના જમીન માલિક અને મરાઠી સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સરે વિરોધ કર્યો હતો। આ વિડીયો વાયરલ કરી સફેદ પટ્ટી સામે ઉઠાવ્યો વિરોધનો સૂર। વિરોધ કર્યા બાદ ધમકી મળતી હોવાનો ફરિયાદીનો દાવો છે। પ્રસાદ વેદ પાઠક નામના ફરિયાદીએ પોલીસ સુરક્ષા માંગી છે। ફરિયાદ બાદ સ્થાનિક પોલીસે સફેદ पट्टी अंगे तपास शुरू करी थी। ये वीडियो खास करके मैं मेरे सारे जैन फॉलोअर्स, जैन दोस्तों के लिए, जैन व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ। आज ये वाइट लाइन रोड से होते हुए मेरे घर तक आई है। विदाउट आस्किंग मी एज अ रेसिडेंट मेरी कंसेंट नहीं ली गई। चेयरमैन सेक्रेटरी सर ने ये कर दिया है। मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? दिस इज ऑयल पेंट, ये निकलने नहीं वाला है। आपको अगर आप जैनिज्म फॉलो करते हो, जैनिज्म बहुत ही अच्छा धर्म है, बट मुझे इसके पीछे लॉजिक जानना है कि अगर आपको आपके साध्वी साधु जो आपके संत हैं उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हो तो हम आपके घर पे नहीं आएंगे, तो क्या आपको ये गलत नहीं लगता? मेरा ये सवाल है। फरियादीए एवो पण दावो कर्यो छे के आज प्रकारनी सफेद पट्टी दादर अने घाटकोपर जेवा विस्तारोमां पण दोरवामां आवी छे। आ बंने विस्तारोमां जैन मुनिओ विहार करता होय छे, एटले तेमना माटे आवी पट्टी दोरवामां आवी छे। जो के फरियादीए रस्ता पर आ प्रकारनी पट्टीने अयोग्य गणावी कार्यवाही करवानी मांग करी। माझ्या आईच्या, माझ्या बायकोच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत आणि रोज आम्हाला हे बघावं लागतंय। आम्ही सगळे कामधंदे सोडून याच्या मागे लागलोय की बाबा काढा, हे तातडीने काढा। हे जे 25 वर्षापासून नव्हतं इकडे, आम्हाला नकोय इथे। तर काही लोकांचं असं म्हणणं आहे की काय तुम्हाला त्रास होतोय, या रंगाचा काय त्रास होतोय? मला रंगाचा त्रास नाही होत आहे, मला हा जो धर्म आमच्यावर थोपला गेलाय जबरदस्तीने याचा त्रास होतोय। हे समजून तरी घ्या। माझी प्रशासनाला हीच विचारणी आहे की या नवीन गोष्टींनी जर धार्मिक तेढ निर्माण होत आहेत तर त्या तुम्ही का करताय? आणि हा तेढ निर्माण झाला कारण की ही एखाद्याच्या वैयक्तिक मालमत्तेत जबरदस्तीने थोपली गेली पट्टी। त्यामुळे हा विषय मोठा झाला आणि मी बोललो म्हणून मोठं झालं। बाकी माझे बरेच इथे मित्रसंबंधी आहेत जे नॉन जैन आहेत आणि त्यांना पण ही खटकली आहे गोष्ट।